कि इस प्रांगण में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में आए मेरे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में, और जिनका आशीर्वाद और जिनका सानिध्य अंबालिका परिवार के साथ हमेशा रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे बीच में उन्होंने इस इनविटेशन को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए हैं। और एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य की तरह जिस तरह से उन्होंने अंबालिका इंस्टीट्यूट का संरक्षण किया है, मैं चाहती हूँ तालियां बजाएं आप और आभार व्यक्त करें। और मैं अनुरोध करूँगी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से, माननीय डिप्टी सीएम साहब से, कि वो आए और इस कार्यक्रम की, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की औपचारिक उद्घाटन कर इसकी शुरुआत करें और अंबालिकन को अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत International Conference on Challenges and Opportunities for Innovation in India, अम्बालिका इंस्टीट्यूट के भव्य एवं गरिमामय इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं संस्थान के निदेशक डायरेक्टर आदरणीय अम्बिका मिश्रा जी, माननीय विधायक आदरणीय आराधना मिश्रा जी, डॉक्टर मालविका मिश्रा जी, डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी, डॉक्टर श्वेता जी, आदरणीय रविशंकर मिश्रा जी एवं सभी एकेडमिक स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, सेना से आए हमारे कर्नल साहब, सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्यारे स्टूडेंट्स, अंबालिका इंस्टीट्यूट ने अपने स्थापना काल से ही शिक्षा के उच्च मापदंडों को अपने यहाँ लागू करते हुए प्रदेश में एक गौरवशाली स्थान बनाने का काम किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हमारे अभिभावक आदरणीय ब्रजेश मिश्र जी ने इस सोच को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरातल पर उतारने का काम किया और केवल इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं खोला, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में किस ढंग से बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनको जीवन में आगे बढ़ने का हर अवसर मिल सके। मैं अम्बालिका इंस्टीट्यूट के सभी प्रमोटर्स को, आदरणीय अम्बिका जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आराधना जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष अम्बालिका इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे प्रतिभागी अपनी पेपर्स को प्रस्तुत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस ढंग से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मैं बहुत आभारी हूँ कि अम्बालिका इंस्टीट्यूट ने मुझे आमंत्रित किया, आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया।
Conference on Challenges and Opportunities for Innovations in India 2023. Can we have huge round of applause for this? We have the privilege, yes, we do have the privilege of holding this international conference in Ambalika Group of Institutions, and I extend a heartfelt welcome and gratitude to our esteemed guest of honor, Professor V.K. Singh Sir, Honorable Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. Our guest of honor, Dr. Retired Professor A.K. Mishra Sir, former Head of the Department, Computer Science, MNNIT, Prayagraj. Our keynote speaker, Dr. Mohit Gambhir, Director, MHRD Innovation Cell, Government of India, who has joined us online. Sir, can you please wave us from there? From CSI. From CSI, we have two dignitaries with us, Mr. Vinay Kumar Johari, who is a former chairman, CSI, and he is having a great contribution starting CSI student chapter in our college. And one more keynote speaker we are having, that is Dr. Puneet Mishra, Honorable Treasurer, CSI, Lucknow chapter. Moving further, I would like to welcome our Executive Director, Mr. Ambika Mishra Sir, Director, AIMT Dr. Ashutosh Dwivedi, Director General, SQS Abbas Sir, Additional Director Dr. Shweta Mishra Ma'am, Assistant Director, Dean Academics, Head of the Departments, faculty members, our esteemed guests, participants, and my dear students who have come here to exchange their valuable experience with us. As we all know, India is a developing country and it needs new innovations and development all day around in many areas like science, engineering, technology, applied sciences, and various other sectors. There is a peculiar need of academic industry synergy in the present scenario. This conference, this international conference, is such a vital platform initiated by AIMT, and this is the 6th which we are running this year, would definitely provide a plethora of opportunities to all the attendees today, and would definitely synergy and create an energy between all the research scholars, the students, delegates, academicians, and industry personas. Those who have come from the various fields to throw some light on various topics and areas. So moving further, भगवान को याद किए बिना हम कोई भी काम नहीं शुरू करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं. तो सबसे पहले हम याद करते हैं माँ सरस्वती को. माँ सरस्वती के आशीष बिना हम सभी के जीवन में अज्ञान का अंधकार है. इस अंधकार को दूर करने के लिए हम वंदना कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें आशीर्वाद देके धन्य करें. इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं अपने अम्बालिका के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे टू प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल सरस्वती वंदना बिफोर यू ऑल. स्टूडेंट्स प्लीज.
Nations start without remembering our country. So now I would request everyone present here to please stand up for our national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे COII Group, which is striving hard to accomplish its vision of making our students truly employable by providing professional training on different skill sets required by the relevant industry along with delivering engineering knowledge and management knowledge. So let's have a glance on the same. Host R.S. Mishra sir, Dean Academics, to take you for the further process and programs. So please hold up the dice. Thank you, Priyanka ji. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन पुंजीथा मागृधः कस्य सिद्धनम्। ये अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे और अपने बिहाफ सबसे पहले तो मैं आप सबका इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चंद बातें अपने संस्थान के बारे में और फिर उसके बाद अपने इस अधिवेशन के कॉन्फ्रेंस के बारे में। 2008 में जब सबसे पहले ये कॉलेज हम लोगों का शुरू हुआ तो ये हम लोगों के चेयरमैन सर का सपना था कि हम अपने स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनाएंगे, नौकरी पाने वाला। और उस सपने को वो लगातार पूरा करते चले आ रहे हैं। और जो हमारे वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबिका मिश्रा जी, वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, उनके नेतृत्व में हम लोग इस कॉलेज को निरंतर आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। 2012 में इस फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और तब से लगातार 2 वर्ष कोरोना के छोड़ के हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते रहे हैं। और वो भी हम लोगों की मजबूरी थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस आयोजित करना नहीं छोड़ा और हम ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2020-21 में हम लोगों ने सर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। अंबिका जी की जब मैं बात करता हूँ तो मल्टीवेरियस पर्सनालिटी, ह्यूमनिस्ट, वाइल्ड लाइफ लवर, एजुकेशनिस्ट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वर्ड्स और शॉर्ट, मैं सोच रहा था कि मैं अंबिका जी के बारे में बोलूँ तो क्या बोलूँ, तो मुझे अली सरदार जाफरी की एक कविता याद आ गई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, डेडिकेटेड टू अंबिका जी। अभी तो चंद ही जलवे जो छलक आए हैं, रंग हैं और अभी मेरे गुलिस्तान में अभी, मेरे आगोश तखय्युल में है लाखों सुबह, आफ्ताब और भी हैं मेरे गरीबा में अभी। ये हमारे अंबिका जी हैं। मैं अपनी कॉन्फ्रेंस की फॉर्मल प्रोसीडिंग्स प्रारंभ करूं उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा अंबिका जी से कि वो आए और जो हमारे आगंतुक डिग्निटरीज हैं शिक्षा के क्षेत्र के हमारे मूर्धन्य विद्वान, उनका औपचारिक स्वागत मांगे। अंबिका मिश्रा, तालियों की गड़गड़ाहट। Very good morning, all of you. On behalf of Ambalika Institute of Management and Technology, I would like to welcome V.K. Singh साहब, आशुतोष त्रिवेदी जी, आपके मिश्रा जी एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आए हुए यूनिवर्सिटी से हमारे रिप्रेजेंटेटिव एंड बहुत अच्छा लगा। ये 6th टाइम हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमने रिक्वेस्ट किया था काफ़ी दूर से सिंह साहब से भी कि आप आइएगा और
चाहते थे कि वो हर बार आए हैं और हम लोग को इसी तरह आकर के यहाँ पे आशीर्वाद दें। हमसे जुड़े बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मिश्रा जी भी इलाहाबाद से ट्रैवल करके आए हैं और आपके सानिध्य में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उनके गाइडेंस में पूरा ये हम लोग ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एंड इट्स सच अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू ऑल हियर एंड ऑन बिहाफ ऑफ अंबालिका आई वेलकम यू ऑल हियर एंड लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। अंबिका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी दूसरा कार्यक्रम जो हमारी विभूतियाँ आई हुई हैं इस कार्यक्रम, अनुरोध है अंबिका जी से कि वो मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर VK से औपचारिक स्वागत। I would also like to mention Professor Mohit Gambhir, who has joined us from US, and I present it is 2 a.m. over there. So he's participating in this conference. You're most welcome. And this is a pleasure in inviting him on the dais and basically on the podium, basically to have interact with the people over here. Mohit sir, thanks a lot for joining us in this conference. And unfortunately, we are missing you. And we cannot offer you, presentations offline. Our feelings are there with you. I request to kindly come over here next week. Thanks a lot, sir. Now I'll request our DG sir, Dr. S.Q. Pass, to formally welcome Dr. A.K. Mishra. Now I'll request our director, Dr. Ashutosh Dwivedi, to formally welcome Dr. Puneet Mishra. Now I'll request our additional director, Dr. Shweta Mishra, to welcome Dr. से लगा के 2022 तक का जो समय था वो मानव के इतिहास में एक अजीब तरह का समय था, जब पूरी की पूरी मानवता एक तरह से एक्सटिंक्शन के कगार। और इस पूरी अवधि में नवाचार या इनोवेशंस ने नई परिभाषाएं ग्रहण की। भारत के संदर्भ में दोनों चीजें आई कि पहले ये हुआ कि वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग सब्सटेंशियली फॉर कोरोना, लेकिन थैंक्स टू द इनोवेटिव आइडियाज ऑफ आवर साइंटिस्ट, वैक्सीनेशन के माध्यम से या अन्य बाकी चीजों के माध्यम से वी वर द विनर्स। एज इंडियंस वी वर द विनर्स। नवाचार या नवोन्मेष या इनोवेशन भारत के संदर्भ में ये एक पास्ट से भी बड़ा एब्यूज बढ़ रहा है, जिसने अब नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ किया है। आप सबको ध्यान होगा तेजस, the light combat aircraft, it was made by Indians at 2000 in 1990, और it is only in 2014 कि बिल्कुल कमीशन है। ये भारत में जो इनोवेशंस की स्थिति थी वो ये, बट नाउ
वही तेजस वी आर एक्सपोर्टिंग टू वेरियस कंट्रीज। इनोवेशंस की अपनी संभावनाएं, लेकिन अपने खतरे भी। चैटबॉट, चैट जीपीटी एक नया मॉड्यूल हम लोगों के सामने आया हुआ है, लेकिन इसके खतरे भी इमिनेंट हैं। हमने अपने यहाँ कुछ डिग्नेटरीज को इनवाइट किया है जो इन सारे एस्पेक्ट्स पे अपने अपने विचारों से आपको अवगत कर रहे हैं। मैं जिनको जहमत देना चाह रहा हूँ, जब मैं उनके बारे में कुछ भी बोलता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते और वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा बोल जाते हो, और मुझे लगता है कि मैं इससे कम उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं जब इस फील्ड में आया तो सबसे पहले मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मेरा अभिप्राय प्रोफेसर वीके सिंह से, गंगा सिंह विश्वविद्यालय राजस्थान की आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। प्रोफेसर वीके सिंह आपके साथ। मेरे बारे में मिश्रा जी का इतना प्यार है कि वो इतना बोल जाते हैं कि हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे सर, उससे कम मैं आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। जबकि डॉक्टर A.K. मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हमारे गुरु जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अम्बिका मिश्रा जी और बाकी डिग्नेटरीज ऑन डायस, ऑफ द डायस। इनोवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी से हुई थी, लेकिन अब जीवन के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे कि आप रोज नए नए ऐप मोबाइल पर देखते हैं और वो ऐप एक इनोवेशन का एंड रिजल्ट है। इस इनोवेशन को इंक्यूबेट करने में और फिर स्टार्टअप करने में टाइम लगता है और उसमें चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपके इसका टॉपिक भी है इस सेमिनार का कि चैलेंजेस ऑफ इनोवेशन। Challenges and opportunities. There are several challenges that India faces when it comes to forecasting innovation. Here are some of the key challenges. Lack of funding. While there are several government schemes to promote innovation and entrepreneurship in India, access to funding remains a significant challenge for startups and small business. There is a need for more venture capital firms, angel investors, and crowdfunding platforms to provide funding and support to innovative ideas. Skill gap. Despite having a large pool of technical talent, India faces a significant skill gap when it comes to innovation. There is a need to bridge the gap between academia and industry and provide more opportunities for upskilling and reskilling to equip with workforce with the necessary skills and innovation. Challenges in infrastructure. The lack of adequate infrastructure in terms of research and development facilities, testing labs, and high-speed internet connectivity is a significant challenge for innovation in India. There is a need for more investment in building a robust infrastructure that can support innovation. Regulatory challenges.
India has a complex regulatory environment that can be challenging for startups or entrepreneurs to navigate. The process of obtaining permits, licenses, and approvals can be time consuming and expensive, making it difficult for small business to innovate. लेकिन ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि जो इस समय केंद्र की सरकार है उसने सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, तो बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप दूर हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। India has been criticized for its weak intellectual property protection laws, which can discourage innovation and investment. There is a need for stronger IP laws and better enforcement mechanisms to protect the right of innovators and encourage more innovation in the country. Challenges in cultural mindset. Indian culture often emphasize conformity and stability over risk-taking and innovation. There is a need to shift the cultural mindset towards a more innovation-friendly approach where creativity and experimentation are encouraged and rewarded. Addressing these challenges will require a collaborative effort from the government, industry, academia, and the public. However, with the right policies and investments, India has potential to become a global leader in innovation. अभी रात में मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि तकरीबन 10,000 नए स्टार्टअप्स चालू हुए हैं, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आपके अब जो है वो खत्म हो चुके हैं। अपॉर्चुनिटीज। इंडिया ऑफर्स a vast opportunity for innovation with a large and growing population, a rapidly expanding economy, and a rich cultural heritage. Here are few areas where innovation can thrive in India. Opportunities in technology. India has a large pool of talented tech professionals and burgeoning startups ecosystem. There is a great potential for innovation in areas such as artificial intelligence, machine learning, robotics, blockchain, and Internet of Things, IoT. Opportunities in healthcare. India's healthcare system is in need of innovation, particularly in rural areas where access to healthcare is limited. Innovation in telemedicine, medical devices, and healthcare delivery models can have a significant impact on improving access to healthcare and reducing costs. Opportunities in agriculture. Agriculture is a major sector of the Indian economy, and there is a great potential for innovation in the areas such as precision farming, crop protection, and water management. Innovation in these areas can help increase yields, reduce waste, and improve sustainability. Opportunities in education. India has one of the largest education systems in the world, but there is a need for innovation in teaching methods and curriculum development. Innovations in online learning, gamification, and personalized learning can help improve the quality of the education and increase the access
to the education for marginalized communities. Opportunities in energy. India is one of the fastest growing energy markets in the world, and there is a need for innovation in renewable energy technologies such as solar, wind, hydroelectric power. Innovation in energy storage and distribution can also help and address the country's energy needs. Opportunities in rising consumer demands. With a population of over 1.3 billion, India offers a huge market for innovative products and services. Rising consumer demands for technology, healthcare, education, and other areas present an excellent opportunity for companies to innovate and meet these needs. Opportunities in digital transformation. India is undergoing a digital transformation which is creating few opportunities and new opportunities for innovation in areas such as e-commerce, digital payments, data analysis, and more people gain access to the internet and mobile devices. Companies can leverage these technologies to creative new products and services. Opportunities in government initiatives. The Indian government has launched several initiatives to promote innovation such as startups in India and Make in India. These initiatives provide incentives and support to the startups and entrepreneurs to innovate and bring new products and services to the market. Opportunities to access to capital. India has growing startups ecosystem, which is attracting investment from both domestic and international sources. These access to the capital can fuel and help innovation and growth in the industry. I have listed out the challenges and opportunities, and to me, I think there will be many more, but I have listed only these. So, throwing to you to think of, and you can improve the opportunities and reduce the challenges. Thank you very much. यहाँ से बैठ के लिए महसूस होता और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आयोजकों का कि उन्होंने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इनोवेशन नाम के थीम पे रखा। बहुत कम होता है जो नवाचार के ऊपर लोग बात करते हैं, और सीधा सरल साधारण अपने वक्तव्य को समाप्त करते यही कहता हूँ, अपने आसपास देखिए, प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, उनके सोल्यूशन लीजिए। बहुत आसान जिंदगी है, बहुत आसान रहा होती है। इंजीनियरिंग जितने छात्र बैठे हैं या और हैं, आप मानेंगे IIT जोधपुर में मेरा पहला असाइनमेंट मैंने किया लिया। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया, VC साहब ने बोला हेल्थ केयर एंड मेड टेक। हमने एम्स बगल में है, VC साहब जानते होंगे, राजस्थान से हैं। तो अभी मैं जाके वो असाइनमेंट शुरू कर रहा हूँ। एम्स एंड IIT जोधपुर के साथ मिलकर हम लोग हेल्थ केयर, मैं जाके वो असाइनमेंट शुरू कर रहा हूँ। एम्स एंड IIT जोधपुर के साथ मिलकर हम लोग हेल्थ केयर मेड टेक के ऊपर हमारे देश के लिए नई पॉलिसी और वो ड्राफ्टिंग की वहाँ से शुरुआत करेंगे। लोकल जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर सामान बनाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को साथ में लेके साथ उनकी चीज़ों को सुधारना और कैसे उसको इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेकर आया जाए, वो चीज़ें सुधारना। ये चीज़ें आप लोग भी अपने संस्थान से कर सकते हैं। 5-5 गांव हमने अडॉप्ट तो किए, क्या अब उनका लाइफस्टाइल और उनका वहाँ से कमाई के साधन ऐसे बना सकते हैं कि हमारे बच्चे वहीं रह के एंटरप्रेन्योर बने। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, अच्छी अंग्रेजी बोलने से कोई बहुत बड़े तीर नहीं चला लेता है। हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। साधुवाद इसलिए
अमेरिका में बैठे हुए भी आपने अपनी मातृभाषा हिंदी में हम लोगों को उद्बोधन दिया। आप सबसे अनुरोध है कि तालियों की जोरदार। सर, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साधुवाद इसलिए कि अमेरिका में बैठे हुए भी आपने अपनी मातृभाषा हिंदी में हम लोगों को उद्बोधन दिया। आप सबसे अनुरोध है कि तालियों की जोरदार। मुझे धन्यवाद इसलिए कि आपने मेरी अपनी व्यक्तिगत भावना को शब्द दिया, और वो मेरी व्यक्तिगत भावना क्या है जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करता हूं। इंडिजीनियस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इंडिजीनियस ही हो सकता है, वो इंपोर्टेड सॉल्यूशन कभी भी लागू नहीं। और इसको आपने शब्द दिए, इसके लिए मेरी तरफ से व्यक्तिगत धन्यवाद। सर 2 लाइन और मेरे जो मेंटर हैं अंबिका जी, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अंबिका जी। वेरी गुड आफ्टरनून नाउ। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके, एंड आई मस्ट टेल यू दैट 2008 में ये जब इंस्टीट्यूशन हमने खोला था तो मेरे फादर कहते थे कि ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ाओ जो 10 लोगों को जॉब दे पाए। Instead of doing a job, they should be able to give a job to 10 other different people. And with this intention, we opened this institute. And when the requirement was not there, we went beyond. We opened labs of robotics. We have a Cougar robot setup, like industrial robot setup over here. We went buying CNC machines which were of industry grade. As you say that production से आप link करने की जहाँ बात कर रहे थे. We went for 3D scanners, 3D printers. We went for a innovation lab whereby we provided all the hand tools to the students. But unfortunately, when you come to India, I'll discuss the problem with you. What we faced, as far as our students are concerned, the kind of environment and faculty which is there, how to upgrade that, uplift that, make them involved in different policies, and basically dissemination of information is not there. You know, the kind of policies the government of India is having, or the kind of policies which are available like on the internet, whereby people can get money and earn through their innovative minds. That is not clear to them, and I think so by jointly working on a common platform, I am ready to participate with you to do wonders in my institutions and around my area of work. Like as you said, you one product, one area kind of thing, whereby you are doing work in villages. My wife is a politician, she is the MLA since last 3 terms. And we can work something out over there also for rural sector and over here also. And you are most welcome to my institute. And एक जैसे सुबह से बैठे हुए थे तो एनर्जी नहीं आ रही थी। आपकी जितना इंटरेक्शन सुना उससे हमें अपने पुराने दिन याद आ गए कि बहुत एनर्जी से इस फील्ड में आए थे, एजुकेशन। एंड कहते हैं जो पैशन से आप आओ तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। एंड हम टीचिंग की लाइन में पैशन से आए थे। Most of the teachers before hiring, I asked whether you want to teach or not. आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, इस वजह से पढ़ाने आ रहे हैं कि आपको टीचिंग पैशन आपके है। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज आपसे देख के प्रेरणा मिली, आप प्रेरणा का स्रोत हैं। एंड डेफिनेटली एज श्वेता मैम वाज टेलिंग दैट यू विल कम टू इंडिया, तो शी हैज इनवाइटेड यू एंड आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू एंड परमानेंटली वर्क विद यू ऑन माय प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने विद्यालय की तरफ से आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं कि जब भी आप भारत आए तो कम से कम हमारे विद्यालय में एक बार जरूर हम लोगों को दर्शन दें और हमसे इंटरेक्ट करें। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। जी मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी यस जी। मैं यही कह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि इमीडिएट एक्शन होना, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी नीड्स। वहीं की वहीं हम एक्शन करें, एग्जीक्यूशन करें और आगे बढ़ें। और मैं बता रहा था कि इस समय मैं जो दिल्ली के आसपास के इलाके में 29 अप्रैल से 5 मई तक रहूँगा। 6 दिन हैं, तो कोशिश करूँगा जरूर कि अगर मैं आ पाऊँ और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को मिलके एक साथ, हाथ को हाथ का सहारा देंगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, हम सब कुछ पा सकते हैं। मेरे यहाँ भाई बन गया है तो मुझे सुना भी चाहिए। 20वीं शताब्दी जब कंप्यूटर की शिक्षा 80 और 90 के दशक में प्रारंभ हुई थी तो कंप्यूटर के इतने ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं हुआ करते। आज की तारीख में जब आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं तो लगता है कि ये ऐसे ही रहा होगा, ऐसा रहा नहीं। इसके पीछे कुछ लोगों का बहुत परिश्रम रहा।
और ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मुख्य धारा छोड़ के कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान दिया। और कंप्यूटर के क्षेत्र में ऐसा वैसा नहीं, ऐसा योगदान दिया कि शायद आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे उन्हीं का परिश्रम था। और ऐसे ही एक विभूति हम लोगों के मध्य है प्रोफेसर A.K. मिश्रा। वो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित रहे हैं, लेकिन MNIT मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होते हुए। तो आपको लग रहा होगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा है बड़ा आसान है, ऐसा है नहीं। इसके पीछे मिश्रा सर जैसे लोगों की मेहनत और उनका परिश्रम है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय A.K. मिश्रा जी का आह्वान करता हूं कि आए और अपने विचारों से हमको अवगत कराएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अम्बिका जी, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट आशुतोष जी, हमारे छात्र और वाइस चांसलर श्री V.K. सिंह जी और फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। इनोवेशन पे कुछ बोलने को रह नहीं गया, मोहित जी ने सारा ही बता दिया। कैन आई पुट माय सम स्लाइड्स 1 or 2? इनोवेयर शब्द से ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसका माने होता है रिन्यू। सो व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग जस्ट टू रिन्यू दैट। वो रिन्यूअल कैसे करें, इसके ऊपर आपको मोहित जी ने भी बहुत कुछ बताया। कितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कितना पैसा है, क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने छात्र यहाँ बैठे हैं ये इसके लिए तैयार है कि नहीं, जो सरकार की चिंता है इस वक्त। इनोवेशन करने के लिए हमारी 130 मिलियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% तो ऐसे होंगे जो इसको कर सकते हैं। वो आप ही लोग, हम लोग नहीं, we are outdated now. So can you really take this challenge? इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है opportunities and challenges. Unless until you take challenges and convert them to opportunities, मजा नहीं आएगा। Challenges always there. और ये चैलेंजेस इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संसार तरक्की करता है। कोरोना ने ये आपको सिखा दिया कि हाउ टू टेक चैलेंजेस, कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज। दैट इज द थिंग व्हिच यू कैन से। वाइपो और यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस की, और एक ब्रिटेन की मैगजीन है इंसीड, इन्होंने एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स शुरू किया है GII। उसमें हम 86 पे थे शायद 2013 में, 2008 में, 2013-14 में 58 पे थे, और 2019 में फर्स्ट टाइम वी केम अंडर 50, 48th प्रॉब्ली। और आज की तारीख 2021-22 का जो उनकी हर साल ईयरली करते हैं उसमें हम 40th रैंक हैं इस वक्त एज पर दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हमारे देश ने भी ऐसा बनाया है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स आई करके, उसकी भी रिपोर्ट आने को बाकी है। यू मस्ट हैव हर्ड मोहित जी, और उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि कितने हमारे यहाँ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है। The main necessity which he was tackling is to build an ecosystem. Innovation ecosystem जिस दिन हिंदुस्तान में बन गया, जो भी हमारे लीडर्स का सपना है to be a 5 trillion economy that will come to that. ये ecosystem आप लोगों को बनाना पड़ेगा। If you want to define innovation ecosystem, you can define it like this. It is a loosely connected network of all the industrialists or any other entity which is involved in innovation who work together.
जैसे आप प्रोजेक्ट में 4 बच्चे मिलकर काम करते हो, इनोवेशन में आपको भी एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। थिंक कलेक्टिवली, इवॉल्व कलेक्टिवली एंड वर्क कोऑपरेटिवली। That ecosystem which is not existing in India today. We don't have any innovation ecosystem available in India. You know something, I don't aware of this. This was defined rather, you can say, known as Moore in 1993, the necessity of innovation ecosystem. As Mr. Mohanji from USA was calling that it is a challenge to be produce a talented labor. Now, we have got to produce talented labor. आज भी हिंदुस्तान में जितने भी इंजीनियर पास होते हैं उसमें से 98% लोग कहते हैं they are not industry trained. That is very bad. इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करती बिना आपके यहाँ 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग दिए हुए। ये कहाँ की खराबी है, इसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और ये जब से मैं टीचर हूँ तब से ये सुन रहा हूँ कि हम प्रोड्यूस ही नहीं करते ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली इंडस्ट्री जाके काम करें। इसमें दोनों तरफ से कमी, क्यूरिकुलम ठीक नहीं, क्यूरिकुलम में इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारे बच्चे तैयार नहीं है। दिस गैप इज रियली मेकिंग द हेड ऑफ दिस इनोवेशन। दूसरा, अभी हमारी सोसाइटी, हमारा रहन सहन हमको ये नहीं सिखाता कि हम रिस्क लें। इनोवेशन ऐसा तो है नहीं कि अभी आज शुरू करें 2 साल बाद हमको तुरंत पैसा भी मिलेगा। नीड्स पेशेंस। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होकर तुरंत तो आउटपुट नहीं देगी ना, 10-12 साल 15 साल। इतना पेशेंस नहीं है हमारे पास, इतना हमको रिस्क लेना सिखाया भी नहीं जाता, इतना हम रिस्क ले भी नहीं सकते। So that is another thing which is bad as far as this innovation is. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ही सबसे बड़ी चीज है जो वर्ल्ड प्रोग्रेस में साथ देती है। इंडिया हैज गॉट 150 मिलियन पीपल। इस कैपिटल को कैसे बढ़ाएं, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसके लिए भी इनोवेशन की जरूरत है। Those countries whom we call as the developed countries, they have invested heavily on this human capital. We have not done it. जो enablers है innovation के, पहला तो human capital है, दूसरा investment। कोई चीज जैसे बताया सरकार ने बहुत पैसा दे रखा है, किसको दे रखा है, ये जरा सा सोचने की प्रश्न है। बच्चों को दिया नहीं कि इनको ये पढ़ा दें। नॉलेज वर्कर्स जिनकी कमी, अभी आप एक अच्छा सा प्लम्बर ढूंढने जाइए, आपको नहीं मिलेगा। जो कि आए उसका काम इतना अच्छा हो, उस पर्टिकुलर पाइपलाइन से सालों साल पानी इलेक्ट्रीशियन ढूंढने। बट इनोवेशन नीड्स ऑल दिस, एवरीबॉडी शुड बी स्किल्ड। इसीलिए हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट की। That is business environment. अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है, पहले तो कुछ शुरू करने के लिए आपको अमेरिका से 50 साल दफ्तरों को चक्कर लगाने पड़ेगा। The invention of this internet, things have cooled down some. Safety and legal, इसके बारे में लॉ तो है, but they are not implemented very good in India. And but progress essentially depends upon the knowledge output from the innovation and knowledge diffusion to produce something which is applicable to the society. इससे हमारी सोसाइटी का फायदा हो। इनोवेशन without any, can say, usefulness of the society
will also not be patented also. दूसरा सबसे बड़ा जो कमी है हमारे हिंदुस्तान में दी इंडस्ट्री ऑफ रिसर्च। हम लोग रिसर्च करते हैं, हमको पैसा भी नहीं मिलता। फर्म साइज हिंदुस्तान में दो तरह की फर्म है, एक बहुत बड़ी फर्म, एक बहुत छोटी, 50-60 लोग, 500,000, 2,000। उससे क्या होता है, जो बड़ी वाली फर्म है, दे हैव गॉट एन R&D सेंटर। छोटी वाली फर्म दे डोंट हैव एन R&D, सो वहाँ तो रिसर्च होती नहीं। उनकी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए कोई इन्वेंशन नहीं। बड़े वाले जो करते हैं उसे अपने लिए करते हैं, उसको रिसर्च शेयर। सो दैट इज कमिंग टू सोसाइटी स्टेज। सो वी शुड हैव MSME नाम दिया हुआ है, तो देयर इज नथिंग लाइक either small or large. Labor market we have discussed. Demographic living. This is a thing to be taken care of. 130 करोड़ लोग हैं और हमारे पास लोग काम करने वाले नहीं हैं। इसको कैसे क्या आप बता सकते हैं कोई रीजन इसकी वजह से? 15 से 59 साल का लोग आदमी मानता है कि काम करेगा, 15 years to 59 or 60 years. Real energy is within this group. So इनके पोटेंशियल को इन्वॉल्व करना वो अभी तक हमारे देश में सीखा नहीं गया। And we as an institute should know कि हम कैसे ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें जो नॉलेज वर्कर कहलाएं। आप लोगों तो पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट करिए फाइनल ईयर में, वही कम से कम इनोवेटिव हो, आगे तो बाद में देखेंगे। अभी तो आप क्या करते हो, आजकल तो एक चैट GPT आ गया है, उस पर प्रोजेक्ट का नाम डाले तो अपने आप ही प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ये कहावत होगी। इटली हैज बैंड इट एंड प्रॉब्ली विद इन 1 year इंडिया शुड आल्सो बैन इट। 14 कंट्रीज ने बैन कर दिया चैट GPT को, 14 कंट्रीज बैन। हाँ, इटली इज द फर्स्ट व्हिच बैन इट। तो हो सकता है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड सबमिटिंग द प्रोजेक्ट्स यूजिंग चैट GPT। सो हमको अपने यूथ्स को जो है उनको मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, तभी इनोवेशन स्टार्ट होगा। बिकॉज वी बिलोंग टू अ कंट्री वेयर फैमिलीज डोंट हैव फाइनेंस टू सपोर्ट। मार्केट डिमांड कर रही है, वेंचर कैपिटल है। Mohammed has talked a lot at Government of India University. This is another thing. He was saying that patent हमारे पास आती है, patent में कितना दिन लगता है अगर आप patent अप्लाई करेंगे? India is the country. This is sample ज़्यादा अच्छा है। India is a country जहाँ करीब 4 साल लगता है patent, awarding a patent from the date you file. You can see that. USA में 20.8 months, China में 20 months, Korea में 15 point something, Japan में 15 months, and India takes 42 months on average to grant patents. That is another thing India is lagging behind in patents and innovations. So that should be improved. Another thing, so my request is that to start with, all the faculty here should encourage the students to please take a good project. तो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने बस ऐसे ही काम चलाओ काम करके
बच्चे भी काम कराओ, नौकरी मिल जाए अपना, चलो किसी तरह से काम कर लो. And if, as Mr. Ambalika Mishra said, that he is doing a lot of things to enhance the innovation, the first step will be कि हर बच्चा एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट करे और कम से कम एक पब्लिकेशन कहीं पे. That will be the start of innovative ideas. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट सो मच. थैंक्स अ लॉट सर. सर एक चीज मुझे ध्यान आ गई आपकी बात में. एक चीज नहीं बल्कि दो चीजें ध्यान आ गई कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक योरसेल्फ एम्प्लॉयबल. वो एक बेसिक प्रॉब्लम कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी एनहांस्ड. यहाँ पर क्योंकि सभी मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी उपलब्ध हैं और डेलीगेट्स हैं कॉन्फ्रेंस में जो आए हुए हैं, तो ये बात उनको भी ख्याल में रखनी पड़ेगी. और दूसरी चीज सर जो आपने बताई, अभी प्लम्बर का एग्जांपल दिया था, आज से 10 साल 12 साल पहले राहुल बजाज ने एक बात कही थी कि इंडिया इज ए कंट्री वेयर वी कैन गेट कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड ₹3,000 पर मंथ, बट वी कैन नॉट गेट प्लम्बर्स ऑन 3,000 पर मंथ. ये एक और पैराडॉक्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो दैट आल्सो हैज टू बी एड्रेस्ड. इसके साथ ये फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस खत्म होता है. 15 मिनट का ब्रेक हम लेंगे, टी ब्रेक, एंड वी विल असेंबल हियर आफ्टर 15 मिनट्स. Everybody is requested for high tea. Sir, thanks a lot, sir. Mr. Ambalika Mishra, Executive Director of this institute. He is a visionary person and he is trying to give this institution a success path on which students can go heights, reach heights. Along with that, it is all team of this institution, all the faculty members, including Director Shweta ma'am, Professor Neeta, Dr. Ravneesh. Thanks for giving me this opportunity to interact with you all. Try to find what are the areas in which computer science research is going on and what are the basic challenges. But when I gone through the topic, that challenges and opportunities for innovation in India, so I tried to find out few statistics for you related to this challenges and opportunities. So when I talk about challenges and opportunities, before that I'll speak a few words about this opportunities and challenges. I know all of you are from engineering background, though trades might be there, different trades might be there. So today's government is basically talking about skill development, and when we talk about this innovation, again innovation is also led by skills. Unless you don't have the skills, you will not going to get any idea or any innovational idea through which you can move on to any startup. So access to job after your engineering education is quite challenging, as well as it is not very easy for any engineer. So a survey was conducted on around 1.5 lakh engineers, and this survey was conducted in India. It revealed that while 97% of engineers, basically computer engineers, wish to work in the core engineering or software engineering, and just 3% possess the programming skills required for employability in the software sector.
However, only a few computer engineering colleges in the country provide the requisite skills to the student for employment. So, this is the scenario today, and unless you all should not be very progressive, you will not be going to get any job, or without any skill set, you cannot be any entrepreneur. So this is the first thing. So you have to work on your skills. So when we talk about this skill set generation, in computer science area, there are n number of fields today, starting from data science, machine learning, artificial intelligence, and these are clubbed together. And you might have, if you might have gone through internet, you might be finding that there are n number of opportunities for the persons who are having these skill sets. So I am focusing this talk of mine into an area in which there are various companies are working, various entrepreneurs are working. They are coming with certain ideas. They are predicting, forecasting, and they are basically doing great things in the area of this. So the topic of today's talk is machine learning and time series. I'm talking about real world applications, since you have to derive your things from that. So this is the agenda for today's talk. I'll talk about something which you all will know, but I'll somehow integrate this all and give you certain ideas on which you can work on your projects and develop your skills so that you can be an effective workforce in near future. So these are the common buzzwords. When I talk about these things, these are the common buzzwords: data, information, and information decisions. So why I have written those? Since data are raw facts through which we generate certain information, and with the help of information, we move towards decision making. So either it's MBA guys or it's engineers. Decisions play a very important role. And when we talk about importance of decision making, you might have, without Peter Drucker, management guru, said that without information, a manager cannot take its effective decisions. So we start from here. Without decisions, and here comes the word we require most. Without intelligence, we cannot have effective decision making. So when we talk about intelligence, we say intelligence as an ability to learn about, to learn from, to understand about, and to interact with one's environment. So how many of you are intelligent? How many of you are intelligent? Oh, there's one guy only. So he put his hand. Rest, other are? So I think since you are from academic fraternity, everyone is intelligent. But which thing, from which, by which attribute of your personality, intelligence is there in you? Whether it is there, hereditary in you, or there are certain other factors involved into it. So when we talk about intelligence, I gone through one study of philosophers in which they tried to resolve that hereditary, या जो हमारा शुरू से जब हम बात करते हैं कि हमारे पारिवारिक गुण हमारे अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पारिवारिक गुणों की वजह से हमारे पास इंटेलिजेंस होती है या नहीं होती. So ये डिबेटेबल इशू था, and they resolved that this hereditary nature
has nothing to play in intelligence. So there is a word I have written, environment. Environment has to play a lot in taking this intelligence. And why intelligence is required by human beings? Since they have to perform certain tasks. Like when we speak generation. For that, intelligence is required. Pattern recognition, intelligence is required. Mathematical theorem proving, intelligence is required. And reasoning and motion in any obstacle filled space. For that reasons, intelligence is required in us. So everywhere there is decision making. And decision making, the basic ingredient is intelligence. Now, coming to another. So this is a picture which shows you and this slide basically has a picture in which there is a comment. We achieve more than we know. We know more than we understand, and we understand and more than we can explain. The picture itself says everything. I am not going to explain much about it. This you can take up. So from intelligence, now we come into this word of artificial intelligence. Since intelligence is natural, we say artificial intelligence is programmed by human beings. It increases with experience. Systems do learn from experience. Though highly refined, need electrical power, and there are a number of ways through which we can differentiate between intelligence and artificial intelligence. But this is not my goal for today's talk, so I am skipping this off. Now, when the word of artificial intelligence came into picture, this was a test which basically established the idea of artificial intelligence, and which is called as Turing test. And still, none of the machine has passed this Turing test, in which Turing test is a test of machine's ability to demonstrate intelligence. So that is there. Afterward, there another test came into thing, that was Chinese room test. This all was just to give you a brief idea from where we are coming. Now, there are certain capabilities into humans which they can do better than computers. Like computers do better than humans are numerical computations, information storage and repetitive operations. Why? Humans can use common sense, can take decision making which machines cannot. Yes. Now, the topic is there. Everything in universe is time dependent, and that is called as time series. And when we on time series, we define time series as a set of observation taken at specified times. Now, there is a picture in which I had shown the evolution of a human being to humanoid. Okay, so this is time dependent, grew over years, and this is basically the structure of human skull. How we started with orangutan and moved into monkey structure, and from there we moved into human skulls. So we can say time series as anything that can be plotted on a line graph. That means time dependent graphs are called as time series. So for what purpose these are used? Since these time series graphs basically guide history. Yeah.
guide history, and they can be used for predicting future. If certain trends are there, we can move towards another trends. So that is time series. And time series basically establishes relationship between a cause and effect and help in classification also. So these are the different areas in which you can use this time series. In every subject, either it's management, it's physics, it's chemistry, time series is followed. You perform experiments, these are time series based. So as soon as you have a graph in between time and certain quantity, you have a time series representation, and you can utilize it through computer science for giving certain sort of predictions or certain sort of classification. So this is the basic idea behind today's talk. But time series is not such simpler. Time series are ubiquitous. And most of the information data produced in a variety of areas are time series. Like we say, about 50% of all newspaper graphics are time series. So these are our observations only. And we can convert any sort of data into time series. Like there's a picture of a leaf. From that, we can also generate time series. Every leaf structure can be converted into a time series graph. Since it is growing and its growth is with time. Our growth is also with time. We can introduce this time series into our lives as well. So every species of a plant has a characteristic leaf space, and each leaf will be unique, but the pattern of peaks and valleys will be similar if the species of the plants are the same. So mango leaves are of same type, banana leaves are of same type, same structure. So we can correlate these all. So there we can use time series. Other time series examples are we can use in medical sciences, physiology, for muscle activation, then historical archives we can use in ECGs, we can use in motion data, and nowadays we are generating lot of data through sensors. Today we are into the world of IoT. Everywhere we are using sensors, and these sensors are generating lots of data, and that data is also time series. And we have just to take our things back, and we have to just use the techniques I am going to tell you. Stocks, sales, goods consumption, animal ECG, images, similarly motion capture, handwritten character recognition, DNA sequencing. Think of an area which is not time dependent. Everything is time dependent, and you can utilize different computing techniques and tools in it. And here I am focusing on one, which is machine learning. Though deep learning is also there, and specifically 2 days back I was just going to deliver about this topic, but somehow I got back and taken this. This is one of my popular paper which is published into IEEE journal, machine learning and real life applications. Now, I am taking you to the fascinating world of data. Data all around. And we computer scientists love to play with this data. Just we go into writing certain algorithms, there are languages, and number of languages. Now, even we have ChatGPT. We don't have to program. Just writing, giving links to that, machine is going to take care. Lots of data is being collected and warehoused, like scientific experiments from physicists,
industry persons, Internet of Things data, web data, e-commerce data from business persons. Similarly, financial transactions, bank credit transactions, online trading and purchasing, social networks, and many more. The list is endless. That's why I have put certain dots here and many more. But this data is to be utilized. Now, this data is to be utilized by us. Us means we all students and faculty members. Since we have to think of where we are generating, from where we are generating data and where we have to use. Even you can club with each other. I'm a computer scientist. I'm working with Hindi persons for character recognitions. I'm working with statisticians. I'm working with doctors for cancer analysis through CNN. So n number of areas are there. You can club, and when you club, you'll have ideas, and those ideas you can implement. Like if you are into your final years, you might be going through projects. Don't go for those projects which are there in the market. Just think a unique problem set by discussing with different teachers of different faculties, and then go to a problem statement and then work on it. What will happen? The project will not be completed, but still you are going to get good marks. Okay. So, since we have collected a lot of data from different things, now what we have to do, we can do aggregation and statistics. That is another area of computer science. Data warehousing and OLM. Indexing, searching and querying. That is again database we are working into. Knowledge discovery, data mining, statistical modeling. And there are data-driven techniques we can use for predictive analytics, machine learning and deep learning. So I am focusing on this particular area today. Now, I've told you about two terms. One is forecasting and another one is prediction. So what is the difference between them? So most of the persons basically use these words interchangeably. But there is a thin line between difference between forecasting versus prediction. A forecast is a calculation or estimate of future events or trends based on scientific means, that is data gathering and statistical analysis. While a prediction is a more general statement, declaration or indication of future events. वो पंडित जी बैठते हैं ना रोड के किनारे एक तोता लेकर के क्या करते हैं? प्रेडिक्शन फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं। लेकिन कई जगह तो पंडित जी लगाते हैं ना फोरकास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है? Then forecast deals in time sensitive space. While when we talk about prediction context based होता है, ठीक है? Any commonly practiced in the media industry, news, sports, commentators, pollsters, and in the betting industry, this prediction is used. But when we talk about forecasting, weather forecasting, economic business forecasting, which is based on specific set of data, और वहीं पे किसकी जरूरत होती है? भी हमारी आपकी जरूरत होती है ना। I told you about three terms: artificial intelligence, machine learning, and deep learning. ठीक है? And in this slide, I have shown you a timeline. Artificial intelligence came into 1950s. 1956 was the year, Dartmouth Conference. Everyone knows. ठीक है? There was a term, this term was coined, artificial intelligence. Then around 1980s, machine learning came into picture. Now, machine learning, they tried to make such machines
that they can learn from their experience. Is it possible? Is it possible or not? Machine can learn from their experience. So it is basically, when we talk about machine learning, it can be defined as ability to learn without being explicitly programmed. Earlier, in artificial intelligence, we are trying to make machines which behave like humans. That they pretend, or we try to make machines which mimic humans. And when we talk about deep learning, this is basically another branch of AI, which is termed as artificial neural network or neural network. It utilizes that. And learning, which is based on deep neural networks, is termed into deep learning. So these are three different areas in which basically research is going on and people are working. So a little bit defining more, when we talk about artificial intelligence, so that is the simulation of human intelligence processes by machines which have the ability of learning, reasoning and self-correction. That is, computer with the ability to mimic or duplicate the functions of human brain is termed as AI. So AI is intelligence exhibited by machines. But when we talk about machine learning, it is a subset of AI, and again it is a component of AI which uses algorithms that allows computers to learn from data without being explicitly programmed. And the third thing, which is deep learning, a subset of machine learning in which multi-layered neural networks learn from vast amount of data. Now, how these is still a question. It's still a question which was earlier asked. Can machines think? Can machines think? So example is that you're finding world chess champion Garry Kasparov is sitting here, and this was the move. This was the move which was played by machine. और यही मूव ऐसा था जिसकी वजह से गैरी कास्परोव वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गए थे और पहली बार कंप्यूटर जीता था, वर्ल्ड चैंपियन बना था. So this was it. A random move, a computer bug to Kasparov, a sign of superior intelligence. कंप्यूटर ने अपने बग में फंसा करके गैरी कास्परोव को मार दी थी और ये सोचा गया कि कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस होती है. But still, computer works on our intelligence. The more intelligent is the programmer, the more intelligent is the AI machine. So coming back to machine learning, there are a number of terms I've written. This is a word play, the things related to that. Not wasting much of time. But when we talk about machine learning, it is a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. This was given by Professor Arthur Samuel, and he made the world's first self-learning program. और वो क्या उन्होंने प्रोग्राम बनाया था चेकर खेलने के लिए, ठीक है. This was in 1952. उस समय बात होने लगी थी इसकी. और कहाँ हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग को? Where to use? So hand-written rules and equations are too complex. ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, रूल बेस्ड चीजें बनाते थे. तो जहाँ पे रूल बेस्ड चीजें फेल हो जाए और इतने रूल्स बन जाए, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं मशीन. जैसे फेस रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं मशीन लर्निंग. The rules of the task are constantly changing. जो आप टास्क कर रहे हैं उसके रूल्स लगातार चेंज हो रहे हो. जैसे फ्रॉड्स, नए नए तरीके के आ रहे हैं. आप किसी कल्प्रिट का माइंड नहीं पढ़ सकते, वो क्या चीज उसमें डाल रहा है प्रोग्राम में, वहां पे हम यूज कर सकते हैं. द नेचर ऑफ डेटा कीप्स चेंजिंग एंड द प्रोग्राम नीड्स टू अडैप्ट इट. पहले आपके पास 100 लोगों का डेटा था, अब 10,000 लोगों का डेटा है.
और वो लगातार बढ़ रहा है। अब उसके ऊपर हम एनालिसिस कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। सो ऐसे एरियाज में सब जगह मशीन लर्निंग यूज हो रही है। सो ऐसे एरिया जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टाइज काम नहीं कर रही हो, जैसे हम मार्क्स पे गए थे, वहाँ पे क्या है, मशीन ही काम करनी है, हम ह्यूमंस काम नहीं कर सकते। वहाँ पे किसका यूज होगा? मशीन लर्निंग का। ह्यूमंस आर अनेबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टाइज स्पीच रिकग्निशन में। देन सॉल्यूशन चेंजेस इन टाइम, राउटिंग ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे राउट चेंज करना है, अचानक आपको ट्रैफिक मिला, उसको कैसे सॉल्व करना है। Solution need to be adapted for to particular cases like biometrics. आपने देखा था ना, लोगों के पास तमाम तरीके निकले जब बायोमेट्रिक्स आई, और उन तरीकों को हटाना किसका काम है? अगेन हमारा। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहती है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, हम कंप्यूटर के पास जाते हैं, हमको आउटपुट मिलता है। नाउ थिंग्स चेंज। इन मशीन लर्निंग वी हैव डेटा as well as we have certain outputs, and through these outputs we work on data to give new set of things with the help of certain programs. So machine learning में अगर हम बात करें तो n number of subjects का contribution, तभी मैं बार बार कहता हूँ, if you mingle hands, कोई भी सब्जेक्ट का पर्सन होगा आपके साथ काम कर सकता है। मशीन लर्निंग में पहली चीज आई, दैट इज अडैप्ट टू लर्न फ्रॉम डेटा और टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस फंक्शन एंड गेटिंग कंप्यूटर्स टू प्रोग्राम देमसेल्व्स। अगर समय आगे का ऐसे ही रहा जैसे हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो आने वाले टाइम में कंप्यूटर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करेंगे। कोई कंप्यूटर कहीं खराब होगा तो अपने आप को खुद रिकवर करेगा। आप देखेंगे नेटवर्क है, नेटवर्क अगर शटडाउन होगा खुद से अपने आप को रीस्टार्ट करके अपने आप को रिकन्फिगर कर लेगा। ये सारे आने वाले समय की प्रॉब्लम्स हैं और इनको ऑटोमेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, वी हैव अ हैंडशेक बिटवीन टाइम सीरीज एंड मशीन लर्निंग टू सॉल्व दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और इन मशीन लर्निंग में हमारे पास 4 चीजें हम कर सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू इस लार्ज सेट ऑफ डेटा में। पहला प्रिडिक्शन और कंट्रोल, प्रोडिक्शन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा अंडरस्टैंडिंग और चौथा डिस्क्रिप्शन। और ये सारी चीजें किन टर्म्स में कहलाएंगी? क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, मोटिव डिस्कवरी, रूल डिस्कवरी, क्वेरी बाय कंटेंट, विजुअलाइजेशन, नोवेल्टी डिटेक्शन, एंड देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आप जब पढ़ने बैठेंगे यू विल फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स। और जब उनका यूटिलाइजेशन। My name is Rahul Kumar and I'm from the COII Group of Institution. Actually, I work on internet routing. My project name is internet routing because in last semester I worked on I was to submit my project as a mini project. And उसमें क्या मैं न्यूज़ में एडवांस लेवल पर उस पर काम कर रहा हूँ इंटरनेट routing पे। जो हमारे प्रोजेक्ट में आपको जैसे मैं सर ने बताया IO एंड्रॉइड एंड वेब एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट routing। तो हमारे जो साथ में जो हमारे फैकल्टी साहब मुझे हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए, जिसमें मेरी सीमा सर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर और शायद आज का प्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेट routing का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो ह्यूमन से फेस किए जाते हैं इंटरनेट routing में, और हम अपने एप्लीकेशन में कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या सिस्टम बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है और कंक्लूजन देखेंगे आगे। तो हमारे इंटरनेट routing का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि routing के टाइम लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल सा वेब और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिससे लोगों को हेल्प होगा और वे अपने routing को ड्यूरिंग मिनिमम टाइम घर से ही कोड कर पाएंगे। और जो एक्चुअली अभी जो हो रहा है कि ईवीएम जो मशीन है उसके द्वारा मशीन खराब होने का है कि बहुत कोड की चोरी हो रही है। तो मेरी कोशिश है कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करके कुछ ऐसा किया जाए कि जो ओल्ड मशीन्स भी है, ओल्ड फ़ोन भी है, उससे लोगों का डेटा शिफ्ट हो रहा है।
तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो होता है जो ड्यूरिंग वोटिंग के टाइम फेस किया जाता है, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, वोटिंग टाइम में बहुत टाइम वेस्ट होता है और मैक्सिमम जब पेपर से वोटिंग होती थी तो पेपर वेस्ट बहुत होता था। और अभी आप देख सकते हैं कोरोना टाइम में लोगों को हेल्थ इश्यू भी बहुत फेस करने पड़ा था और वो जैसा बताया वो चोरी होती है और कभी कभी मशीन जो ईवीएम मशीन है उसके भी बहुत सारे इरर्स आते हैं। उन सभी को रिजॉल्व करने के लिए हमने कुछ फैसिलिटी जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट था उसमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया था और उसको और एडवांस लेवल पर उसको वर्क कर रहे हैं। तो हमें वो कुछ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम जैसा बताया कि एंड्रॉइड और वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और उसके जो क्या जो नॉमिनी होगा कैंडिडेट वो अपने डेटा सभी फिल करेगा और डेटा केवल उसी को देखेगा वो फिल किया है, अगर किसी को भी नहीं शो होगा। और जो वैसे जो वोटर है वो भी अपना डेटा फिल करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स डेटा होंगे और जो वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट उसी के ऊपर जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, कैप्चा वेरिफिकेशन होता है, तो उसके द्वारा वो जो है वेरिफिकेशन होगा और आफ्टर वोटिंग वोटर को सबसे इसमें किया है तो उसमें वोटिंग कंप्लीट कर दी। और देन क्या है तो आफ्टर वोटिंग ऑटोमेटिक जो हमारे जो वर्क कर रहे हैं ऑटोमेटिक वोट भी काउंट होगा, ऑटोमेटिक वोट काउंट करने के बाद रिजल्ट फाइंड करते हैं कौन वोटिंग में विनर है, ठीक है। और इसको हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए हाई सिक्योर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर फेस रिकॉग्नाइजेशन इसमें डालते हैं तो किसी दूसरे के आईडी से कोई दूसरा वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज करेंगे तो वो सेम पर्सन जो वोट करेगा वही अपने फेस रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइजेशन अपलोड करके वोटिंग कर पाएगा। हमने कुछ सबसे पहले एडमिन का मॉड्यूल होगा। एडमिन मॉड्यूल क्या होगा, क्या करेगा तो जो भी कैंडिडेट का डेटा अपलोड करेगा अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा और डैशबोर्ड के जरिए वो इलेक्शन क्रिएट करेगा कि इलेक्शन का किस टाइम है, ठीक है। और उसमें वो टाइम फिक्स करेगा रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है और सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके सभी डेटा फिल करेगा। और जो हमारे नॉमिनी है, नॉमिनी क्या करेंगे कि जैसा मैंने बताया कि वेरिफिकेशन के द्वारा ओटीपी वेरिफिकेशन के द्वारा वो लॉगिन करेंगे और अपने जो इन्वॉल्व करेंगे और जो भी उनका जो भी डेटा है जैसे उनको कैंडिडेट आईडी मिलता है वो अपलोड देंगे, आधार में जैसे जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है वो फिल करेंगे, ठीक है। एरिया फिल करेंगे और रियल टाइम अपना जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि देता है रियल टाइम जैसे ब्लिंकिंग के लिए बोलता है, ये जो है रियल टाइम पे वर्क करेगा। और जो वोटर होगा सेम वो जो कैंडिडेट डेटा अपना फीड कर रहा है वोटर भी अपना सेम डेटा फीड करेगा, वो फीड करने के बाद वोट करेगा। तो फेक आईडी से वोट नहीं कर पाएंगे। एक जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड शो कर रहे हैं तो आधार कार्ड से एक ही बार वो शो करे, उस आधार कार्ड से दोबारा कोई दूसरा उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। और आपका जो वोटिंग करने के बाद उसको SMS मिलेगा और जब जो ड्यूरिंग जो टाइम डिक्लेयर होगा इस टाइम तक पूरा वोटिंग फिनिश हो रहा है तो आफ्टर टाइम ऑटोमेटिक जो है रिजल्ट काउंट हो जाएगा कौन विनर है। और उसमें क्या होगा कि जो हमारे वोटर होंगे वो अपना आइडेंटिटी कार्ड वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोपोज मेथोडोलॉजी होगा वो किस प्रकार वर्क करेगा, जैसे मैंने बताया कि वो वोटर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वोटर जो है अपने जितने भी डेटा से उनको फिल करेगा वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू वो जो है वो प्रोसेसिंग में जो है वो जाएगा। आपने जैसे आप बताया जैसे जानते हैं कि सबसे पहले जो भी हम डेटा अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वो डिक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्ट करने के बाद वो शिप कोड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर टाइम वो जब उसके लिए हम जो है लाइव सर्वर रियल टाइम डेटाबेस यूज करेंगे फायरबेस। तो उसको हाईली सिक्योर करने के लिए हम लोग प्राइवेट और पब्लिक की का यूज करेंगे। जैसा बताया इंटरनेट वोटिंग ऐसे 3-4 पॉइंट स्लाइड should not be a part of paper. Time limit भी है।
15 minutes. Basically, idea is to share your idea to just of your idea, the total summary, so that anything that Go to previous slide. Go to previous slide. previous slide. everyone. My name is Upadhyay from the CRT College, CS second year. ये कनेक्ट होने वाला ट्राई करेंगे, उन्होंने मैसेज किया था मैंने भी गेस किया था आज हम ब्लैक सिक्वेंट So as you can see, in the my presentation is topic IoT and AI in health system case study. My name is Ambalika and author to Dr. Sunil Sharma, Associate Assistant Professor CSE Department, and Digital Training and Abhishek Kumar. आगे बढ़ाओ In my table of content, history of IoT, what is IoT, how IoT works, application of IoT, application and benefits of IoT, healthcare, what is AI, role of AI in healthcare, and references. History of IoT. The term Internet of Things was used by Kevin Ashton during his work at COII, which became widely accepted. And पहले सर 21% सर ज़्यादा डेथ रेट ज़्यादा IoT और AI का हेल्थ से हमारा डेथ रेट कम हुआ है और जैसे कि ऐड कैसे यूज करेंगे ये सब सिस्टम जैसे आप जो फाइल बना कर मुझे समझ आ रहा है सबसे बेस्ट यूज करते हैं होता है दवाओं की एक्सपायरी पर चढ़ते हैं आईआर कंप्यूटर कनेक्टेड है दवा 10 दिन अपने रेफरेंस में रखी हुई है जैसे आईआर जाम कर देते हैं आईआर कनेक्टेड है इस तरह के एप्लीकेशन यूजफुल होते हैं मेरा कैंसर बात में बहुत अच्छी चीज है इसके डेटा इसकी एनालिसिस इसके फोरकास्टिंग इसका मॉडल देन नहीं लेता है केस प्रिंट ऑफ द कहां चलेगा स्मार्ट ग्लास है और फिर सेंसर्स जैसे कि हमारे स्मार्ट वॉच में है और वेरेबल सॉक्स है और मोबाइल फ़ोन भी है जैसे GPS, ये सब वेरेबल डिवाइस है जिससे मदद से हमारा डेटा स्टोर होता है क्लाउड में और फिर उसको हम बहुत सीधी किसी के पास शेयर कर सकते हैं डॉक्टर से और advantages है सर AI का हेल्थकेयर में AI डेटा इम्प्रूव डायग्नोसिस AI की मदद से हम किसी भी ह्यूमन में हम बहुत पता कर सकते हैं कि उसको कुछ डिजीज है कि नहीं है और अगर imagination if all functionality used in a single chat app like end-to-end encryption
and image AI image generation and real time chat, video etc. Good morning all of you. Good evening all of you. My name is Raj Singh. I am a final year student, IT branch, and today I am present about Discord clone. First, start the Discord clone. The project is totally based on one-step technology. The project is totally based on one-step technology. Yes, sir. सर द प्रोजेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन वन स्टार टेक्नोलॉजी. ये प्रोजेक्ट जो है पूरा टोटली वन स्टार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि सर इसमें जो भी फोटोज होती हैं वो सब क्लाउड में स्टोर होती हैं, एंड इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो MongoDB में सेव होती है. सर बैक पीछे सर जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो सब क्लाउड में सेव होती हैं, और उसके बाद इसमें जो भी डेटा होता है वो end-to-end इंक्रिप्शन होता है, एंड इसका जो एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है. अब इसमें देखो मेरा जो डिस्कॉर्ड क्लोन था इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन कौन से मैंने सोल्यूशन किए. अब नॉर्मली एक डिस्कॉर्ड क्लोन था वो बनाया किस लिए गया था कि मतलब कि कोई भी कंपनी है, कोई भी डेवलपर कंपनी के लिए बनाया गया था, लेकिन एक कोई डेवलपर कंपनी या फिर कोई डेवलपर के लिए क्या क्या चीज़ नीड होती है, उसको इमेजेस की जो नीड होती है, फ़ोटोज़ की एंड मीडिया की नीड होती है, एंड गूगल ड्राइव, गूगल मीट, ये सब की नीड होती है उन लोगों की. तो जो डिस्कॉर्ड क्लोन था इसमें ये सारी चीज़ नहीं थी, एंड इस सारी चीज़ के लिए अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे, जैसे AI इमेज जनरेटर है तो इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में लेना पड़ता था, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ नहीं थी. तो हम लोगों का मतलब मेन मोटिव ये था कि हम लोगों ने सारी चीज़ कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे किया है. तो जैसे जो हम लोगों का ऐप है इसमें हर एक चीज़, जैसे AI इमेज जनरेटर हो गया, ईमेल, और मैंने AI का चैट GPT का भी यूज़ किया है, स्क्रीन शेयर का भी यूज़ किया है, इसमें स्क्रीन शेयर का भी यूज़ किया है, एंड ऑल थिंग में हम लोगों ने इसका यूज़ किया है. एंड जो ये डिस्कॉर्ड क्लोन है इसको हम कंपनी और MNC बड़े लेवल तक भी यूज कर सकते हैं. सर स्लाइड करना. और इसका इंट्रोडक्शन यही था कि हम लोगों ने इसको end to end इंक्रिप्शन था, एंड इसमें देखो ये जो हम लोग डॉकर एप्लीकेशन है ये एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और हम लोगों ने इसमें डॉकर यूज़ किया. अब डॉकर क्या होता है, डॉकर एक्चुअली ये होता है कि मान लो करंट टाइम वर्जन 12 चल रहा है, और मान लो इन फ्यूचर 14 वर्जन आ गया है, तो हम लोगों को फ्यूचर में हम अगर ऐप डाउनलोड करें तो 14 वर्जन रहेगा, हमको इसे 12 वर्जन ही चाहिए. तो डॉकर में ये होता है कि जो भी हम लोग डाउनलोड मतलब पहले से एक फाइल क्रिएट कर लेता है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है पहले एक्सेस करके रख लेता है. तो जैसे मान लो 14 वर्जन चल रहा है, अगर हमको 12 वर्जन चाहिए तो ये डॉकर की हेल्प से हम लोग 12 वर्जन भी ले सकते हैं. और उसके बाद इसमें ड्राइव फंक्शन हम लोगों ने ऐड कर रखा है. हम लोगों ने इसमें हर एक चीज़ ध्यानपूर्वक रखा है. देखो इसमें ड्राइव फंक्शन हम लोगों ने इसमें रखा है, और चाहते तो मोबाइल में, हार्ड डिस्क में, या फिर गूगल ड्राइव में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ड्राइव फंक्शन में रखा है. इसमें जितना भी डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है. सर और इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे रिस्पॉन्सिव UI एंड UX, मतलब कि ये हर एक डिवाइस पे अवेलेबल है, जैसे कि डेस्कटॉप पे हो गया, बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन, सब पे हो जाएगा. और उसके बाद रियल टाइम चैट एंड वीडियो कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन है, मतलब इसमें रियल टाइम चैट एंड वीडियो का है, एंड सेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी है जैसे मैंने बताया तो डॉकर का, एंड क्लाउड मीडिया मॉडल है. अभी हम लोगों ने इसका क्लाउड मीडिया पर है, बट इन फ्यूचर हम लोगों इसे AWS में शिफ्ट करने के सोचे हैं. एंड उसके बाद मैन ऐप है तो SEO फ्रेंडली है. मैन ऐप की वजह से अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो ये अच्छे से रैंक भी करेगा, और इनक्रिप्टेड है, हम लोगों ने इसमें end-to-end इंक्रिप्शन का यूज करके रखा है. और उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेज एंड ग्राम. मल्टीपल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे इसमें बहुत सारी लैंग्वेज का यूज करके रखा है. मान लो कि मैम को जापानी पता है, मेरे को हिंदी इंग्लिश पता है, मैं इंग्लिश मैम को ट्रांसलेट करके यहाँ से भेज सकता हूँ. इसमें ग्रामर करेक्शन भी मैंने ऐड करके रखा है. AI इमेज जनरेटर मैंने इसमें ऐड करके रखा है, मतलब कि आप कोई भी इमेज गेस करिए एंड उसमें आप रैंडम डाल दीजिए, वो इमेज आ जाएगी. ये मैं अभी प्रेजेंट करके दिखा दूंगा इमेज जनरेटर. इसके बाद एडवांस एप्लीकेशन मैंने लगा के रखा है. AI टूल चैट GPT का भी यूज करके रखा है चैट में. लाइट वेट है और सिंगल पेज एप्लीकेशन है. एंड उसके कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं, रिड्यूस पेपर, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम है, और डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज सब रखी है. और उसके बाद एक मेन मॉड्यूल है, थोड़ा स्क्रॉल मॉड्यूल सब आगे स्क्रॉल.
सर मॉड्यूल में सबसे पहले एक लॉगिन मॉड्यूल है, एआई मॉड्यूल। लॉगिन मॉड्यूल में ये होता है कि सर से मेरा कोई भी यूजर अगर एप्लीकेशन में आ रहा है तो सबसे पहले उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जब वो लॉगिन करेगा तो उसके पास एक OTP जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल पे एक OTP जाएगा और वो OTP वैलिड रहेगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। और अगर 2 मिनट में वो मतलब कि कर रहा है तो हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद उसको रीसेंट OTP करना है। मान लो बाई चांस सर डायग्राम तो हम लोगों ने कुछ नहीं बना करके, नहीं सर आगे थ्योरी नहीं है सर। और सर हाँ आगे स्क्रीनशॉट हम लोगों ने रखा है जितने भी बने सर आगे। और ये हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके रखा है सर। ये हम लोगों ने स्क्रीनशॉट, जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट था ये हम लोगों का स्क्रीनशॉट था। यहाँ पे इमेज वो एक प्रोजेक्ट में लाइव करके दिखा दूंगा अभी। सर ये मेरा चैट एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, स्क्रॉल डाउन। ये लॉगिन, हाँ सर यस सर। और सर इसमें लॉगिन मॉड्यूल से आप लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। एक और स्क्रॉल, और उसके बाद ये OTP जब आता है तो उसका ये मैंने लगा के रखा है एक और उसका ये मतलब बैकएंड पे डेटा जैसे आपकी प्रोफाइल है तो आपकी देखो किस फॉर्म में PNG फॉर्मेट में दिखाया है कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, बैकएंड में डेटा सेव होता है पूरा। एंड ये भी एक सर्वर है चलाने के लिए, एंड ये भी उसको डेटा के स्टोर करने के लिए सब बैकएंड में। एंड ये रेफरेंस ऐसा इसमें क्या है तुमने किया है जो आजकल की करंट प्लेटफॉर्म पे नहीं है? सर इसमें हम लोगों ने कैसा AI इमेज जनरेटर सबसे पहले लगा के रखा है सर। डिस्कॉर्ड क्लोन में एक्चुअली उसमें AI इमेज जनरेटर नहीं लगा, वो चाहिए तो अलग के प्लेटफॉर्म पे था वो आपका इंस्टाग्राम हो चाहे वो ट्विटर हो, सब में डीप सर। नहीं AI इमेज जनरेटर मैंने इसलिए लगेगा है कि आप कोई भी सपोज कीजिए कोई भी आप टैप किए वो आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रेजेंट करके। एंड उसके मैंने इसमें ईमेल के हम लोगों ने टेम्पलेट रखे हैं, इसमें कम से अप्रॉक्स 100 रखे हैं कि आप लोग से मान लो किसी HR कोई भी कंपनी को भेजना है तो आप लोग उसमें सर्च करिए, मतलब कि रैंडम, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी फिक्स है। एंड हाँ ये सर मतलब रैंडम हम लोगों ने अभी मतलब जो भी पॉपुलर है 100 ऑफ 100 तो मैंने वो ले लिए हैं और उसमें हम लोग एक बना के उसमें रख लिया। हाँ Good afternoon everyone, my name is Shaisa Sana and the topic is a review of object detection algorithms based on deep learning, and there are algorithms that I have used on my project. There are several algorithms but we have worked on one, that is SSD. So this is a review on all the algorithms and we are using only SSD. So it is just a review paper. Next. So this is what I am going to talk about. First is object detection, it's working. Yes ma'am. As you can see that firstly it acquires a large amount of data sets and then it acquires all the similar kind of objects that it can track, and accordingly it presumes all the types of objects that are in the, yes, like this car, truck, traffic light, it's organizing everything accordingly. Next. And the working, first the training, data collection, feature extraction, object proposal generation, object classification and localization. So the data is collected and accordingly the object is extracted from that particular image and classification is done. Then the inference, image pre-processing, the data is extracted and then pre-processing is done on the data set. Feature extraction, object detection, object classification and localization. These are types of object detection methods that are there. Traditional methods are sliding window, background subtraction, HOG, frame difference, bag of bone, I think, RCNN, fast RCNN, faster RCNN, and there's one more RFCN, that is region based fully convolution network, and then there is SSD and YOLO, which are regression based and they are on deep learning. They are based on deep learning. SSD is a single shot multi-box detector and YOLO is you only look once. Next. So the traditional, they are less accurate and they are less efficient in deep learning based algorithms. There are three types mainly: SIFT, SURF and sliding window approach.
These are the main that are very good in detecting all the objects. The best one is SSD. Actually, it is just a review. So the main result is that YOLO and SSD are the best. And as you can see in the graph, that YOLO, fast YOLO and SSD are almost ma'am, accuracy. How accurate? What you review? How many algorithms you have checked the review? Ma'am, sir, these are all 6. RCNN, RFCNN, fast RCNN, faster RCNN, YOLO and SSD. And you found that SSD and YOLO are the best? Yes, yes. To detect any object? Yes. On what parameters? So, ma'am, accordingly the what objects it detects and the accuracy that it detects, there are some challenges also, like if there's less light. Set of parameters, one parameter, two parameter, three parameter. ऐसे आप क्या मतलब आपने कैसे इसको डिटेक्ट किया? क्या राउंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, स्क्वायर में करेगा, ट्रायंगल में करेगा, पैरामीटर कैसे आप बता सकते हैं? एल्गोरिथम्स की आपको बताइए क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं? Limitations. हाँ, वही मतलब कैसे किया? आप आपने अच्छा किया। बता दीजिए। Note down. ग्राफ हाँ, मैं और स्पेसिफिक टूल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। You are saying that YOLO is giving you best result. Yes, out of sir. this. Yes, sir. So why not everyone is using YOLO? Why should Sir. not going to again CNN? So actually, we are working on a project, and it is on augmented reality. And in that there are algorithms, but our project is mainly on SSD. The background algorithm that is used, it is in SSD. So we had to do a review paper. YOLO is prepared by someone. Yes, sir. You cannot do any activity as per your choice in YOLO. So I didn't understood your question. You will study YOLO first. Yes, sir. ठीक है? YOLO has various versions 8 and 54. Yes, sir. YOLO 1, 2, 3, Yes, 4. sir. Then we are working on 5. Yes, sir. But still YOLO is not recommended by people from deep learning. You check first and then learn out. Work is good. Yes, You sir. have that insight, but you have to study hard more. Yes, sir. chosen a good So- topic, but your analysis has to be specific. डेटा ज़्यादा चाहिए बेटा थोड़ा सा। अच्छा काम किया। डेटा और होता तो बताने में अच्छा लगता है। Yes, sir. उसको आप कैप्चर What sort of edited you Yes, sir. एल्गोरिथम में इसलिए डेटा सेट सर रिव्यू पेपर में है। यस सर, एक चार्ट है, उसमें कैसे है? को दिखाना चाहिए। So you have to use the data set actually. सर डेटा सेट सर मतलब आपने कंपैरिजन किया ना? यस सर। एल्गोरिथम का उसके लिए कोई सर ये एक्चुअली एक पेपर था, रिसर्च पेपर, सो आई गॉट इट फ्रॉम देयर. आई रिव्यूड इट एंड अकॉर्डिंगली आई गॉट इट फ्रॉम देयर. पेपर से ही वो उठा करके वो सर मतलब आई स्टडीड अबाउट इट एंड देन ओके, फाइन, फाइन। I request to Suraj Avasthi to present his paper on topic flatmate search. So, a very good morning, good afternoon to all of you. My name is Suraj Avasthi. I am final year student of BTech CSE, and now today I am going to present my project paper presentation behalf of my group. So, without wasting much time, I come to my topic: flatmate search. Flatmate search is a project based on the online web application. So, it connects the individual like officials or scholars who are searching for a shared living space. It has widely convenient way to find the people compatible with another people with the similar lifestyle and preferences.
So in the abstract, the flatmate search project aims to create a web application which connects the individual, and it helps to find the compatible flatmates. In the problem statements, so जब भी हम कहीं बाहर रहने या फिर पढ़ने या जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले मतलब रहना और खाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल या फिर मतलब महंगा पड़ता है। तो इसके लिए हम एक शेयरिंग पार्टनर मतलब इस ऐप की मदद से ढूंढ सकते हैं, और इसमें आपकी लाइफस्टाइल या आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड मतलब और मैचिंग पर्सन आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके साथ आप मतलब बेहतर फील कर रहे हो। सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, एंड it can be a very useful tool to improve your mental health also. So with the help of this web application, you can feel like home away from home. So yes sir. So in the development process, we have used waterfall development. Yes. So technology. Yes. So for the front end development of this project, we have used HTML, CSS and Bootstrap language, and for the back end, we have used MySQL as a database. And yes ma'am. Yes ma'am. मैम इन दिस वेब एप्लीकेशन वी कैन मतलब हम जिस लोकेशन पे मतलब हमें जानना है कि वहाँ के फ्लैट और फ्लैटमेट मतलब, तो वहाँ पे हम लोग जैसे इसमें यूज़र आईडी के ज़रिए अपनी लॉगिन करेंगे, तो इसमें हमारा एक मतलब प्रोफाइल बन जाएगी। तो उसके बाद जब हम अपना वो लोकेशन डालेंगे, तो वहाँ पे जितने भी रूम्स अवेलेबल हैं या फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे यस मैम MySQL से मैम MySQL के लिए। yes. And for IDE we have used Visual Studio Code. Sir. Yes. जी सर। यस सर, बट थोड़ा MySQL familiar थोड़ा इट्स सो जी सर। कॉल मैसेज चैट इसमें भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है सर। मतलब सर इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मतलब उसमें मेंशन होगी। यस सर, जैसे आईडी बनाएंगे हम तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उसमें स्टोर होंगी, वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। पेपर आईडी मैम 230759 सूरज अवस्थी 230759 लास्ट में ये ऐड हुआ 230759। I request to Atul Tiwari to present his paper on the topic review of driver behavior monitoring using tools of deep learning and fuzzy inferencing. Good afternoon, chairpersons and dignitaries of Ambalika Institute. I am the yes ma'am. Yes ma'am. I am the student of PNCT college and my pursuing BTech MTech. My research paper on review of driving browsing behavior of monitoring tool and deep learning and fuzzy logic.
लिटरेचर रिव्यू, हाँ ड्रामेटिक नहीं सर। मेनली इसमें रिसर्च पेपर में मैंने ये देखा है कि मतलब एक्सीडेंट एक नॉर्मल हो चुका है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को मेन इस पेपर में रिसर्च किया है कि मतलब देखा कि मतलब ड्राइवर के बिहेवियर से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सीडेंट को। मेनली ड्राइवर के साथ साथ हमें देखना है कि आगे हमारे रोड कैसा है, अगर साइड हमें कोई सामने से कोई ना आए, रोड भी देखना ज़रूरी है, हमें साइड मिलना भी ज़रूरी है। तो मेनली हम इसमें क्या करते हैं, वेनेट का यूज़ किया है। मतलब क्या होता है कि जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में सेंसर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी पे वो मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकल को भी कंट्रोल करना है खुद से, और ड्राइवर को फजी लॉजिक के थ्रू हम देखते हैं, और फजी लॉजिक केवल इमेजेस के उसके फेस रिकॉग्नाइज करता है। और उसमें क्या रेस्टनेट 50 के थ्रू डीप लर्निंग का यूज़ किया मैंने, जिसके थ्रू मिलियंस उसकी व्यूज़ हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है कि ड्राइवर का बिहेवियर क्या है। ड्राइवर मतलब उसकी आँख ब्लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि अनकॉन्शियस है या ड्रिंकर है। तो इन चीज़ों पे रीड करके फिर ये पेपर रिव्यू किया मैंने। यस सर, CNN सर कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क है सर। इसमें 3 लेयर्स, 2 से 3 लेयर्स होती हैं सर। कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करने के साथ साथ मैंने रेस्टनेट 50 का यूज़ किया, जो 50 लेयर्स पे यूज होती है, जो मिलियंस ऑफ इमेजेस होती हैं और फजी लॉजिक के थ्रू हम उसमें रीड करते हैं। CNN कॉन्सेप्ट सर न्यूरल नेटवर्क, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क जिसमें क्लासेस होती हैं 2 से 3 लेयर्स में हम उसको इमेजेस को रीड करते हैं उसके थ्रू। यस सर, पुलिंग का हाँ यस सर, हाँ पूलिंग लेयर का सर इसलिए यूज कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस सर, यस सर, ठीक है, ये अगर आप यस सर, अपने पेपर में या अपने केसेस में जितने शब्द मेंशन करोगे ना, उसका तो होता है आपका एक्सपर्टीज है। यस मैम, ये सोच के मेंशन करिए, कम शब्द इस्तेमाल करिए, कम एग्जांपल दीजिए, लेकिन आपको एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। कोई आर्टिस्ट डायग्राम बेहतर होगा, डायग्राम बना देते हैं, उससे आप समझा भी सकते हैं जो भी दिखता है, किसी भी रिलेशन दिखता है, सब दिखता है। थैंक यू मैम। Thank you so much, Atul. Now I request to Kriti Jaiswal to present her paper on IoT secure system, the need of the emerging era. She will presenting her paper via online mode. Kriti, am I audible? Kriti, you may proceed now. Next one. Next one. Now I request to Himanshu Chanyal to present his paper on a review of plant disease identification methods. Himanshu sir.
Himanshu sir. ऑनलाइन है ठीक है. Our next participant is, I request to Akash Raghuvanshi. I think there is some network disconnected. Hello, Akash sir. His topic is spam ham mail detection using machine learning algorithm. Akash sir, you may proceed now. Rishka is not a participant. Yes, sir. Yes. Okay. Good afternoon, everyone. Myself, Akash. Here I present my paper in English text using machine learning techniques. Nowadays, all of us are aware the Gmail, all of us use Gmail, Mail, Outlook. When all of us communicate through the electronic way, then we will all understand the word spam. That's a big difficulty also people don't know how to develop spam. There are some outlines, what is spam, statics, KDB, Mesa.com, partial optimization result computer. Especially in my paper, we applied the machine learning algorithm based on the data set for email data set. Then we optimize the data set with the help of PSO algorithm. PSO algorithm is genetic algorithm. This is what we learned in our paper. Let us start. What is spam? All of us know the spam is unsolved activities are generated or unexpected mail. Email that involves sending identical or nearly identical messages to thousands of recipients. Generally, spam is using for the sharing purpose. There is a service now of attack service which is using the spam techniques. The main purpose of spam is to fraud someone for the money or to store the privacy of the someone for the money. The second slide is problem. What is the problem? Because this driver can find millions of mail with a few words of investment. If the print has few rupees, he says millions of mail to the user. This just makes basic storage and partition private. All of us aware that we use Gmail, which give only 15 GB free space to store our mails and data in a cloud. So if we continuously receive the junk mails, spam mails, then our storage is wasted and it also consumes the bandwidth of the server because we communicate through the internet, so spam will also consume the bandwidth and it also consumes the ISP investment, internet service for investment. And so spam is a problem because the cost is put onto us, the recipient. The main problem is that because we pay the cost, we pay the price of those spam mails. In this manner, the fraud occurs with the clients. So we pay the price. This is the main issue for the spam mail. There is some statistics of data, so how the spam is spread all over the world. From their tables. These tables show there are billions of loss. The $8.9 billion loss in US, only the spam mail. And the spam user group for nowadays 63% by 2020. All of us are also citizens of mail in our spam label folders. Who benefits from spam?
they sold this data to the various companies for the inquiry and the lead generation. Then we are ready for this strategy. Then let us discuss what is our work. First one, we collect the data. Data are available in the different formats. So we collect the data, analyze the data, then analyze the data and then clean the data to further use for the data. This process is simply known as the knowledge